सबको जय मसीह की। Praise the Lord. 하나님을 찬양합니다. मेरा नाम पास्टर सुदेश कुमारी है And my name is Pastor Sudesh Kumari. 저희 이름은 수데스 쿠마리 목사입니다. और आप सब जानते हैं मैं इंडिया से आई हूँ। As you know, I have come from India. 알다시피 저는 인도에서 왔습니다. और मैं जब यहाँ पे आई मुझे पता था, मैं बाइबल भी जानती थी, मैं प्रचार भी करती थी, प्रभु के बारे में मुझे पता था। And before coming here, I was a pastor. I know about the Bible and I was preaching the word of God. 여기 오기 전에 저는 목사였고 하나님의 말씀을 전하고 있었습니다. और उन्हीं वचनों को, जो वचन मैंने यहाँ आके सुने हैं, उन्हीं को मैं बार बार पढ़ती भी थी। And as I came here and listened to the word of God, and those scripture I used to read before. 저는 여기 와서 하나님의 말씀을 들었는데 전에도 그런 구절을 읽었었는데 मैं धन्यवाद करती हूँ कि मुझे यहाँ इनवाइट किया गया, बुलाया गया और मुझे और नॉलेज मिलने के लिए मुझे बुलाया गया, परमेश्वर ने मुझे यहाँ भेजा। And I am thankful to the Lord that I was invited here to know the word of God and the knowledge of the Bible. 그런데 여기 와서 하나님께 감사한 것은 제가 그 말씀의 지식과 하나님의 마음을 알 수 있게 돼서 정말 감사했습니다. इब्रानिया की पुस्तक में बहुत बार पढ़ चुकी थी, लेकिन जब पास्टर पाक ने उसको एक्सप्लेन किया तब मुझे अच्छे से समझ में आया कि हमारे पाप माफ हो चुके हैं। And I have read Hebrew chapter before, but this time coming over here and when Pastor Park preached the word of God from Hebrew chapter 10, I came to know that my sin has been forgiven. 그런데 여기 와서 이제 히브리서를 예전에 읽었었지만 바우스 목사님께서 히브리서 말씀을 전하시면서 제 죄가 사해졌다는 것을 알게 됐습니다. इब्रानिया 10 के 18 में लिखा है, और जब इनकी क्षमा हो गई है, पापों की क्षमा हो गई है, तो फिर पाप का बलिदान नहीं रहा। In Hebrew chapter 10 verse 18 it is written that there is no more offering for sin. 히브리서 10장 18절에 보면 더 이상 죄를 위한 제사가 없다고 나와 있습니다. ये सच्चाई अगर हम अपने मन से पाप को नहीं हटाएंगे तो हमारे जीवन से भी कभी पाप नहीं जाएगा। And if we do not accept this truth in our heart, then sin cannot be removed in my heart. 그리고 이 진실을 마음에 받아들이지 못한다면 죄가 마음에서 사해지지 않는다고 알게 됐습니다. हम बार बार पाप करके बार बार यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पे नहीं चढ़ सकता। And for our sin, continuously Jesus cannot be crucified on the cross. 그리고 저희 죄를 위하여 예수님께서 계속해서 십자가에 못 박이실 수는 없습니다. उसने एक बार हमारे लिए अपने आप का बलिदान देके हमारे सारे पापों से हमें क्षमा करवा दिया, माफी दे दी। For by one offering, He has perfected us forever. 단번에 제사로 인해서 저희를 온전하게 하시고 완벽하게 하셨습니다. और मैं धन्यवाद करती हूँ पास्टर ली का, इन्होंने भी मुझे नेक्स्ट वीक बहुत सारा हमें समझने को दिया। And I am thankful to Pastor Lee Hangyu because on the second week we were able to know more word of God. 그리고 이한규 목사님께도 정말 감사드리는 것은 2주차에도 저희가 더 막 하나님의 말씀을 알게 됐습니다. और इन्होंने हमें बताया कि अगर हम जैसे कि इस औरत को पत्थर मार रहे थे और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तू आगे से पाप नहीं करना, तो वो हमें बोला गया है, मुझे बोला गया है कि जो गलतियां तूने कर दिया, वो आगे से कोई पाप नहीं करना। पास्टर ली ने ये वचन उस दिन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। And Pastor explained us very nicely about the woman who was caught in the act of adultery. Jesus said, "Neither do I condemn you, go and sin no more." So this word of God is spoken to me. 그리고 목사님께서 그리고 말씀을 정말 잘 전해주셨는데 가늠 중에 잡힌 여자를 말씀하시면서 더 이상 정죄하지 않는다고 하셨을 때 제 이야기를 하는 것 같았습니다. अगर हम बार बार पाप करेंगे तो बार बार माफी मांगना पड़ेगा और बार बार हम फिर यीशु मसीह को हम नहीं चढ़ा सकते ना क्रूस पे। If we sin, then continuously we have to ask forgiveness of sin, and for us Jesus have to continuously die on the cross. 저희가 지속해서 죄를 지었을 때 저희는 계속 죄를 씻어야 되고 예수님께서는 계속 십자가에 못 박히셔야 되는데 तो इसलिए उस औरत को ही नहीं, यीशु मसीह ने हम सबको कहा कि दोबारा पाप नहीं करना। But it is not only to the woman who was caught in the act of adultery, but to all of us Jesus said that go and sin no more. 그 간음 중에 잡힌 여자를 향한 말씀뿐만이 아니라 저희 모두에게도 이제 더 이상 죄를 짓지 말라라고 하셨습니다.
और जब इनकी क्षमा हो गई है तो फिर पाप का बलिदान नहीं रहा, सारे पापों की क्षमा हो गई है। As it is written in Hebrew chapter 10 verse 18 that there is no longer an offering for sin. 히브리서 10장 18절에 보면은 더 이상 죄를 위한 제사가 없다고 나와 있습니다. और इब्रानिया 10:10 में लिखा है, इसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। As it is written in Hebrew chapter 10 verse 10, by that which will we have been sanctified through the offering of body of Jesus Christ once for all. 히브리서 10장 10절에 보면 이 뜻을 쫓아 예수 그리스도의 몸을 단번에 들이심으로 말미암아 우리가 거룩함을 얻어노라라고 적혀 있습니다. अगर हम अपने रास्तों को सीधा करते हैं, उन पे चलते हैं, तो आगे हमारे बच्चे भी हमें देख के सीखते हैं। अगर हम जो सीखा है, जो मैंने सीखा है, अगर मैं उन रास्तों पे चलती हूँ तो आगे मेरे बच्चे भी मुझे देख के सीखेंगे और उसके बाद हमारे जीवन में, मेरे और मेरे बच्चों के जीवन में कभी पाप नहीं आ सकता अगर हम चले तो। And whatever I have learned over here, and my children they will learn from me. And 제가 여기서 배운 것은 저희 자녀들도 저에게 배울 것입니다. जैसे मैं चलूंगी वैसे ही मेरे बच्चे चलेंगे और जैसे मैंने यहाँ सीखा श्योर मैं वैसे ही चलूंगी। and as I have learned over here, my children will learn and they will walk on my way. 제가 여기서 배운 모든 것들은 저희 자녀들도 배울 것이고 그 길을 따라갈 것입니다. और एज ए पास्टर मैं अपने चर्च को भी ये सब बातें जरूर सिखाऊंगी। मैंने पूरा नोट कर लिया है नोटबुक में और मैं सारा मैसेज अपना जरूर अपने चर्च में भी शेयर And करूंगी। after going over to my church, I will preach this gospel and everything I have noted down, and I will teach and preach in my church. मेरा यहाँ आना बहुत फायदे का हुआ। 저희 교회에 돌아가면 제가 저희 그 성도분들께 이 복음을 전할 것입니다. And coming over here, it is really profitable for me. 그리고 여기 오게 되면서 정말 저에게 많은 것을 얻을 수 있었습니다. 2015 से जो मैं सेवा कर रही थी, जो मैंने सीखा और उसका अब और ज़्यादा पॉलिश हो चुका है। And from 2015, I have been doing ministry, but now it is really more profitable for me. 제가 2015년부터 사역을 시작했는데 지금 훨씬 더 제가 얻은 것이 너무 많습니다. मैं सबका धन्यवाद करती हूँ, सब टीचर्स का, सब पास्टर्स का, सबका मैं धन्यवाद करती हूँ और सबको जय मसीह। And I really thank to all my teachers and all my pastors, and really I'm thankful to all of you. 그리고 또 교사분들 모두 그리고 목사님들께 그리고 또 여러분 모두에게 정말 감사드립니다.